Okay, so everyone, we will wait for 5 to 5 minutes more, then we will start. As attendees are attending the lecture. इंजीनियरिंग खत्म हो गया उसका दूसरा सवाल है. Hello, am I audible? Yes, yes. Wait for 5 minutes. We will continue our session. We will start our session. Good evening, everyone. We will start our session in 2 minutes. Hello there.
Hello, good evening everyone, and warm welcome to all of you on this special event. We are really honored to have an guest lecturer, Sudarshan Shinde, sir, with us today. We are very glad to have you all with us, and today I welcome you on the behalf of Spark Committee. Let me shortly brief you all about Spark Committee. Spark Committee comes under the Training and Placement Cell and stands for soft skills, presentation, aptitude, reliability, and knowledge. So basically, from a certain point of reference, we are committee which focus on overall development of students, which will execute eventually helping in acquiring a satisfactory job. Today, we have gathered here to help you, our youngster, talented students, to their first steps towards a successful career. As we all know, securing a good placement in today's highly competitive job marketing is not an easy task and requires a lot of hard work, dedication, and the right kind of training. That's why this problem is that's why this program is so important. I will equip our students with the necessary skills, knowledge, and confidence to succeed in workplace. So our speaker for today's Git and GitHub session is Sudarshan Shinde sir. He is the president of Shala Amchi Tumchi, non-profitable ENGO organization. Shala Amchi Tumchi provides technical education for rural areas of school, technical partners of SAT and SDT, robotics, Vgroom, and Doxel. SAT organization, technical events, training, workshops, and providing volunteer support also. He is a software developer engineer at Promothon. Sudarshan sir has 4+ years of experience in software development and has worked on different technologies. Now I would hand over to the session to Sudarshan sir. Thank you, Aditya, for warm welcome. Good evening to all of you. Yeah, I'm audible. So, Yes, sir. You are as Uday explained, like sir, in market unit to jobs, it's very tough today, like recessions and all. Like, so we facing, like as a fresher, we are going to market. We facing some issues like technically wise because in college our syllabus is not able to get job. Like it's not provide to that much knowledge. We will get the job as per our requirements. So basically, if you start the career as a software engineer, you need to basically know about the gate and GitHub. What is the gate and GitHub? So we start from the what is the gate and GitHub. I'm sharing your link with you, and then start. Okay. Yeah. Sir, can you share please that link I share with you? Okay. I need to share on the screen or whether I need to No, share in the chat. you can share with the chat. I have shared it. I have. Okay. So I'm sharing my screen. First, what is the gate? Right? Everyone has the question, what is the gate? Like our session is on the gate. It is the basic version control system. Like you think in our project, so many developers are working. Almost sometimes 100 people of teams working on a single project. How do they manage their work and collaborations, everything? Managing the that collaborations, we can use the Git. Sorry for disturbing. Yeah. Hello. There is some noise at your back. I'm audible. Yes, you are audible, but there is some noise at your background. Okay, there is some noisy. Yes. Now you could clear me. Give me 2 minutes.
Okay, now it's better. Yes. Uh, yeah. Like Git is like version control. Like so in a project, like so many software engineers working on the same project. The Git is help to managing their works, tasks, and all those things. Like at a time, we not conflict like a same project, like same branch, creating branches, different branches. Every developer working the different branches, and then we can the merge that code in a single branch. We will learn that thing the in later in the part. Okay, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सर ने फाइल जो शेयर की आपके साथ उसमें एक डाउनलोड द गेट है, तो गेट को पहले डाउनलोड कर लो। एवरीवंस गिट को डाउनलोड करो। जिनका लाइक मैक ओएस जो यूज कर रहे हैं मैक ओएस वाला, विंडोज वाला विंडोज, और जिनका लिनक्स है दैट्स व्हाट डाउनलोड्स ऑन द लिनक्स। If you will face any problem, let me know. If it's done, raise your hand. Anyone facing issue to download? Okay, I think so. Is it done for everyone? We can move to the next slide. What is the GitHub? GitHub is like a web-based platform for the version control. Like we created some repos, some branchings, and all those things like in the Git, and we push that all codes, all resources on the GitHub. Like basically, GitHub is like our source base. We can store all the data, all those things on there, and we can host the pages from the GitHub, by using the AWS, Netlify, Vercel, other resources. We can even on the GitHub pages also. We can see the all detailings on that page and website. So, how many have the GitHub's accounts here? Other?
So we need to create GitHub account also like accordingly. Like just go on the github.com and create one. Just sign up. Okay, you can see this screen. Try to sign up and enter your email here and start your creating account. Within 5 minutes, we can create the account. Uh, how many created GitHub account or how many remaining? If you account done, please raise your hand. Okay, please try to fast. Okay, we can move the next. It's we both set up like Git and GitHub. So first of all, whenever we set up the Git and GitHub, we need to generate SSH key. SSH key matlab SSH security cell. We need to like secure cell for the like developments and all. No one hack or the like repository and okay. So someone remaining to like make accounts and installing it. If it is done, we can start open just your terminal and in terminal just write SSH eject type for the creating the SSH key
After this, writing this SSH hyphen keygen, just enter it, and it's asked to you like a file which have to say the key, and here it will be given to the path for the ID file for the SSH key. You can find our SSH key here. Just enter after this path, and already like if you have already existing key, it will just press no. If you have no already key, just enter. You can do enter. Here. This is done. Okay, after the generating key, we can find like our path here, the .ssh id key. It's here. See here the SSH file. We can open it in the VS Code and copying that SSH key using the code command, and it will be open in the VS Code. And just we need to copy this key and add in your account, GitHub account. Okay. So I copy this key, and if I want to add this key in my GitHub account, I'm going to my GitHub account. Just when you like reach on GitHub account, you can see this left of the board. Just you need go click on your profile picture. If you are the profile picture, then you can click on here, and here is the setting. Inside of the setting, there is the SSH and GPG keygen. Just click on here. I'm deleting my previous key and adding here the new SSH key. Okay. This is the process of adding the SSH key. Have you done it, or anyone have doubts how to add an SSH key? Anyone have doubt? Can you tell us once again? Okay. For the generating SSH key, we need to like open terminal command, add one command SSH hyphen keygen, and enter 3 times. Once you enter in the 3 times, it will be generate a SSH key like a, and here will be the show to the folder path where is your SSH key, right? So this is the my for SSH key path. Everyone has the like different path home, otherwise like your name .ssh folder, and then inside of that folder there is one file id underscore rsa. This is our public key. We need to add this public key to our account. For that, we can open in the VS Code for the copying the key. We can open this folder in the VS Code and just copying that path of the key. Just I'm copying here key and add in the GitHub account. Okay. Once done, add to GitHub account. There is a command git config -global होगा ना भाई, अपने मर्ज करने में छोड़ दिया होगा user.name. You can add your the GitHub username here, and same as like a GitHub username देख ले भाई 070, and adding the email here. GitHub hyphen एफ सीक्रेट global user.email. Okay. You can add your GitHub username here and email here. Once you add, you can check it will be added or not. You can just write the git config hyphen global user.email. You can see here the git email address. Okay.
This is the way it's little bit difficult part, adding Git, SSH key and all. Now we move over the next part to create a repository in GitHub and all. Okay. So first of all, I'm going to my dashboard desktop. Here's my desktop opening the terminal. I create a folder here by using the mkdir. Mkdir means like a make a directory. Make a directory. I'm using the creating here one like anything like a branching, any folder name. Once it's done, you can use just like ls for the listing. Listing you can see the here the like branching folder. It's created automatically. Okay. mkdir make a directory and folder name. What you want to you can use any folder name here, and just then after we can do ls. Ls means like list. Here the all list available on the desktop, all folders and files on desktop here will be shown. I want to enter in the branching folder. Just I'm using the cd branching. I will enter in the branch like that folder. Okay. Once this done, we need to go code dot. It's like code dot. It will be the open in the VS Code. If this command will be not working in your system, just you need to just go on the desktop. Here's a desktop, and here is the branching folder. Just you need to path in terminal. Open path in the terminal. And do open path in the terminal. It will be automatically open your path. If you're not finding this the path. Okay. Like for the creating folder, we using the mkdir command and folder names. Once folder is done, we can open it's in the VS Code. VS Code, or otherwise we can now like see in VS Code. It will look like this. Just folder name branching, nothing else. Inside of this folder, we need to create the branch name. We can use just like file name. We can use the command touch, and any file index.html. We can generate the file. Will be appear into automatically here index.html. You can see the file. Okay. Up to now, this you have any doubts how to create the folder and how to create file? Hello. Yes, sir. No doubt. Okay. So creating file. For the creating file, we can use the touch, and for the directory mkdir. For the folder, we using the command mkdir. Like cd means like change directory. We want to the change directory one directory to another directory. Like means one folder to another folder. We can use the cd command. Change directory. If you want to open this folder in the code, like in VS Code, we can using the code dot space dot. It will be open in the VS Code. Just in VS Code, we can entering like some things. Like now, if we check Git is initialized in this folder or not, so that therefore we can using the ls-a. Here is initially right now no Git file is available in this folder. Now we need to create the Git file. That's why we need to initialize the Git, and the command is git init. Here is the command initialize for the Git. We using the git init command. Git init. Okay. So running this command, you can see here initialize the empty Git repository, and here is the path where is the like that Git file. Right now, if we run ls-a, we will show the Git file inside of the folder.
Okay. Uh, any problem right now? Any doubt? You can move to the next part. After the initializing Git, we need to git remote add origin repo path. Now we create a repo in our the GitHub account. Go in your GitHub profile. Here is the name is the repositories. In repository, just click repository and add here new. Here is the new, and just click on the new inside of the repository and add here the repository name. Choose owner here, like if you self owner, just like select. This repository already exists, that's why you need to different name of the repository. You can use here. This repository is available. Okay, here we can select public and private repository. Public and private repository, we have to add like a public repository. Just create, click on the create repository. Now our repository will be created. If we refresh, we not nothing's in the like code and all of these things. We need to connect now git to GitHub. Okay, we adding this path like git remote add origin. We need to this path. Just I'm copying from here. Git remote add origin and in here like git remote add origin. Like first command we initialize the git. Now we add the repository to git, GitHub repository to git. Okay, once we add, we initialize the repository. We can then after we can add, we run the command git add. We adding the all files of the GitHub git add. Okay, for the committing git commit, we adding the new commit. Just initial commit and the initialize commit. Okay, now we want to the this code like we added the code here. We want to this code push on the GitHub. That's why we're using the git push origin master. Master is like kind of the or branch name. We'll find here like if we're using the git push hyphen u origin main, then we can push on the main branch. Otherwise, we can push the master branch. Okay, we push all code in master branch. We can see our code here. Okay. Like we need to focus on the 4 commands: git init, git remote add origin, and the path of the repository, git add, git commit, and git push origin master. We need to import this command. If you have any doubt how to create repository and how to push it, anyone have doubt? You can ask any questions. We can create like once again. Okay, this is the one way to creating the repository, and I will show you another one way to creating the repository. Okay, first I am creating the repository here. Running underscore 2 public, adding readme file and creating the repository. Empty repository, only just readme files here is available. I want to this repository in the my system.
if I go in my system on desktop, here is no folder name of the learning underscore 2. I want to this folder inside of my local system. Then we just need to copy this path, SSH path. We can copy from here, and here we are adding to git clone and pasting that path. Okay, this is the path. Now we creating the one directly name of the learning, cloning this path. After complete this cloning, just now you can see here learning to folder name after the HTML. Before the HTML, there is a directly material kit React main, but now after the HTML, you can see here the learning to folder. Changing the directory, entering the learning to underscore 2. Once you enter in the learning to, just open it in the code. See here only the readme file. If you want to add a new file here, we can adding from to here like index.txt for the text. And you can add any kind of the text here. Now, if we check here like Git is available inside of this folder or not, initialize. If we clone any repository, the automatically Git is already initialized in the folder. Like see here, we can see the .git file here. Okay, and now we change. तो हमने जो भी कुछ चेंज किया तो कैसे डिटेक्ट हो जाएगा लाइक देयर इज अ कमांड git status तो यहाँ पे git status के बाद लाइक इट विल बी शोइंग branch main, your branch is updated main, and here the file we updated. Just same command git add, because already we have the git initialize. Okay, that's why we're using the git add, git commit. Third command is the git push origin main. But now if we check here, only the readme file is available in this repository. Once we push the code, here the index.txt file also added. Git push origin main. Done. Here index.txt file is added. Anyone like those install the git in their system, can you share your screen? Like it will be help to everyone. Please share your screen. Anyone? Okay, we can move to next part. सर एक्चुअली हम लोग अलग अलग शेयर करके नहीं होगा इसलिए Okay, okay, मोबाइल yeah, पे सुन रहे yeah. हैं Okay, no problem. Yeah, no problem. So for the creating, like see, right now we are we run a command git branch. Once we run the git branch command, here the only one branch available main. If I work in a branch and Uday is working the different branch or main branch, like so that time we need to create a one branch. For the creating new branch, there is a command git checkout one b for the creating new branch and a new branch name. Like something new feature.
or new branch name is the new features. Okay, if you entering, currently I'm in main branch, right? Once I using this command git checkout hyphen view new features, new branch will be created here, like switch to new branch. If I run once again the command git branch, here you can see here like a main branch, new feature branch. Okay, in new feature branch you can add anything, like अगर कुछ भी ऐड करना है हमें न्यू अलग अलग डिफरेंट वर्क करना है तो अलग अलग ब्रांच से कर सकते हैं। जैसे कि न्यू फीचर ब्रांच में अगर मैं चाहता हूँ ओके, सेंड टैब पे ओपन कर दें, अनदर एक फाइल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे index.html। index.html में h2 के अंदर स्पार्क क्लब लिख देता हूँ। अब ये जो चेंजेस किए, लाइक वंस आई कम हियर, जस्ट अब जो चेंजेस हुए उनको देखने के लिए git status मतलब we can clear like index adding the new file index.html। ओके, जो चेंजेस किए जिस ब्रांच में कि अब ये ब्रांच मुझे पुश करना है तो सेम आई एम फॉलोइंग द सेम पाथ, git add git commit मैसेज इज फॉर द डेवलपमेंट। अगर आप प्रॉपर कमिट मैसेज देते हो कि उसमें मेंशन करना पड़ता है कि एग्जैक्टली आपने इस फोल्डर में क्या काम किया था। एडेड HTML फाइल नेम ऑफ इंडेक्स। तो इससे जो दूसरा डेवलपर जो काम कर रहा है जब भी प्रोजेक्ट में आके देखा कि एग्जैक्टली क्या काम हुआ है तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे लाइक इस फोल्डर में इस फाइल में क्या काम किया हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि न्यू फाइल ऐड की है HTML फाइल, उसका नाम जो है इंडेक्स है। ओके, वंस एंटरिंग नाउ, इससे पहले हमने क्या किया था, गिट पुश ओरिजिन मास्टर पे किया था जो हमने रिपोजिटरी अपने यहाँ पे जनरेट की थी। उसके बाद हमने यहाँ पे देखोगे अब तो मेन पे पुश किया है जो कि हमने क्लोन कर लिया था। और करंट क्या किया ना कि हमारे जो ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन यहाँ पे हमारा मेन था, बट अब जो हमारा ओरिजिन है वो चेंज हो चुका है। हमारा ओरिजिन जो है न्यू फीचर है। तो अब जो कोड पुश करेंगे हम गिट पुश ओरिजिन, तो ब्रांच नेम हमने जनरेट किया था, ब्रांच नेम मींस और ओरिजिन, लाइक जब भी गिट ब्रांच करोगे तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, न्यू फीचर एंटर कर दोगे, कोड विल बी पुश। ओके, अब हमने कोड तो पुश कर दिया है। अगर हम इस फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो इससे पहले हमारे पास index.txt फाइल ऐड थी और जो बाय डिफॉल्ट थी रीडमी फाइल थी, राइट। अब यहाँ पे index.html के लिए क्या है ना कि न्यू फीचर एज रिसेंट पुश लेस देन अ मिनट। न्यू फीचर जो ब्रांच है ये बेसिकली ब्रांच नेम। अगर यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो वी हैव टू ब्रांच नेम, वन इज मेन अनदर ऑफ द न्यू फीचर्स। अब न्यू फीचर्स ब्रांच का जो कोड है वो हमें क्या करना है, मेन ब्रांच में मर्ज करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करके कहता है, यहाँ से आप कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करके एड न्यू HTML फाइल ऑफ द इंडेक्स, जो हमने कमेंट दिया था सेम कमेंट से यहाँ पे फाइल जनरेट हुई है। और यहाँ पे अगर डिफरेंट ब्रांचेस होते तो हम डिफरेंट ब्रांचेस में एक मर्ज कर सकते थे। बेस ब्रांच वी कैन चेंज एनी टाइम, और जो हमारा ब्रांच है ये यही रहे। और यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट जनरेट होगा। पुल रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, मतलब दो फाइल्स में सेम कोड आता है, दो डेवलपर अगर सेम कोड करते हैं और कुछ चेंजेस हो जाता है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाता है और फाइल्स नेम बताता है कि इस वाले फाइल्स में कॉन्फ्लिक्ट है, यू कैन चेंज दैट कोड। तो यहाँ पे हमारे पास वो वाला यहाँ पे कोई भी चेंजेस हमारे पास अभी यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, बिकॉज वर्किंग हम सिंगल यूजर ही यहाँ पे यूज कर रहे, तो दैट्स व्हाई हियर नो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं तो वी कैन मर्ज दिस पुल रिक्वेस्ट। और उसके बाद पूछता है कि अगर कंफर्म करना है या नहीं करना है, लेट्स कंफर्म द पुल। अगर हम अब कोड में जाते हैं और चेक करते हैं तो जो index.html फाइल है वो यहाँ पे आ चुका है इस वाले में। तो इससे कहते हैं कि मर्जिंग ब्रांच मर्जिंग, कोड मर्ज कर दिया, एक ब्रांच टू सेकंड ब्रांच में कोड मर्ज कर दिया। तो अब नाउ वी कैन क्रिएट लाइक, अब एक ब्रांच हुआ
तो इससे पहले अगर हमें और भी ब्रांच यहाँ पे मल्टीपल्स ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो, अब हम इस वाले फोल्डर में आते हैं कोड में, तो यहाँ पे करंटली हमें क्या दिख रहा है कि 1 2 3 फाइल्स है। वन है index.html, index.txt और readme फाइल, राइट। तो अब क्या करना है कि जैसे ही मैं, अब हमारा जो मेन ब्रांच है तो वो है मेन, मैं फिर से इस ब्रांच मतलब दिया है कि एग्जिस्टिंग ब्रांच के ऊपर अगर चेकआउट करना है तो जस्ट वी चेकआउट गिट चेकआउट ब्रांच में, ओके। अब अगर गेट ब्रांच अभी करेंगे तो अब हमारा ओरिजिन जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमारा ओरिजिन जो है वो मेन ब्रांच हमारी ओरिजिन ब्रांच है, ठीक है। अगर कोड में आप यहाँ जाते हो और चेक करते हो तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फाइल दिखेंगे आपको, और आपका जो index.html फाइल है वो कट हो चुका है, राइट। यहाँ पे अगर देखोगे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो वो index.html फाइल अवेलेबल ही नहीं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, गिट पुल। अब एक बार आपने पुश कर दिया था, अब पुल करना है, मतलब जो कोड हमारा गिट पे है उससे हमें पुल करना पड़ता है। उसके लिए क्या करेंगे, गिट पुल ओरिजिन। कहाँ से पुल करना है, मेन से। तो क्योंकि मेन में अगर हमारे यहाँ पे अगर देखेंगे हम गिटहब पे 3 फाइल है, बट अगर लोकल में अगर मेन में देखेंगे तो ओनली वी हैव 2 फाइल्स, राइट। तो वी कैन द गिट पुल ओरिजिन मेन। जैसे मेन ये कमांड रन करेंगे, जितना भी कोड आपका गिटहब पे होगा, किसी और डेवलपर ने जो ऐड किया होगा वो कोड आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे भी आपने इसको गिट पुल करते हैं, यहाँ पे दिखा दिया index.html 11 फाइल्स एडेड, ओके। अगर हम अब VS कोड में जाके देखते तो फिर से index.html फाइल अपने यहाँ पे अपेंड हो गई है, राइट। अब मल्टीपल डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट पे कैसे काम करते हैं, तो उनको कैसे ऐड किया जाता है, तो वो बताता हूँ ना क्या। तो सेटिंग्स में हम क्या करेंगे कि अब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि अगर मेरे प्रोफाइल्स में अगर मैं जाऊँ तो आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जाके तो यहाँ पे टीम्स बनती कि हाउ मेनी पीपल्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वाले इसमें सिर्फ 6 पीपल हैं। अगर मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लाइक वी मोर ऑलमोस्ट 60-65 पीपल्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन होता है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल कोई प्रोजेक्ट है, अगर उससे मुझे किसी को एक्सेस देना है तो मैं उससे अलग तरीके से मैसेज दे सकता हूँ। सेटिंग में जाकर आप कोलैबोरेटर से आप जिस रिपोजिटरी के लिए आपको एक्सेस देना है उसमें जाओ। उसमें जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में कोलैबोरेटर करके यहाँ पे कोलैबोरेटर में चले गए और यहाँ पे ऐड पीपल करना होता है। कोई बताओ यार, अपना गिटहब यूजर नेम बताओ, मैं उसको कोलैबोरेटर इनविटेशन भेज देता हूँ। एनीवन प्लीज गिटहब नेम, सॉरी CRATHN CRACHN प्रथम सॉरी एंड नॉट CRATHN प्रथम उगले अच्छा प्रथम मूल्य, PRATHN dash UGL THN dash UGL प्रथम उगले dash डैश UGAL नो सर GALE प्रथम उगले, आगे से बता दो CRATHN THN MM ये नहीं आता सर प्रथम PRATHAM डैश उगले UGALE। once again सर M के पहले A नहीं आता हूँ बस वो चाहिए अच्छा अच्छा प्रथम उगले
Yes. Yes. तो तुम्हें मेल आया होगा एक बार ना, मेल वरती क्लिक करते हैं, इनविटेशन पेंडिंग होती है. ओके, वंस से एक्सेप्ट द इनविटेशंस, तो ये जो पेंडिंग इनविटेशन है, पेंडिंग इनवाइट है, वो हट जाएगा और उसे इस गिटहब रिपोजिटरी का एक्सेस रहेगा. ही कैन ऐड एंड कोलैबोरेट इन दिस रिपोजिटरी. ठीक है, तो बेसिकली जब उसे कोलैबोरेशन करना होगा तो उसके लिए सिंपल ट्रिक है, एक बार कोलैब एक्सेप्ट करने के बाद बताना पड़ता है. ये सर कर दो. कर दीजिए. ये बता रहा है पेंडिंग इनविटेशन. ओके, नो इशू. तो अब प्रथमेश के गिटहब में ये रिपोजिटरी दिखना स्टार्ट हो जाएगा. या तो इस वाले यूआरएल पे जब भी जाएगा गिटहब में, उसका जो मेल के साथ उसके ये वाला यूआरएल भी गया होगा. जब भी वो ये वाला यूआरएल हिट करेगा तो यहाँ पे कोड में जाके सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करके ये वाला जो एसएसएच वाला पाथ है या एचटीटीपीएस वाला पाथ है, इस वाले पाथ को कॉपी करके only git clone and paste URL path, ये करके वो इस रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट कर सकता है. ठीक है, तुम्हें प्रथमेश शेयरिंग का ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास, शेयर कर सकते हो क्या? सर एक मिनट. आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन, करना यार, क्लियर हो जाएगा. यस सर, लोडिंग हो रहा है. ओके, यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है. नहीं है क्या? No issue. तो हम और एक ब्रांच क्रिएट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं शेयरिंग में. My screen is visible right now. ठीक, सेम प्रोसेस अगर हमें अब गिट ब्रांच करेंगे अपन. See here the like two branches, one is a main and new feature branches, right? Now we creating another different branch, git checkout hyphen b. Branch name, like we can adding any feature js file.
Creating the new branch. Now we can check the branch, git branch. Now our origin branch is the feature.js file. We can changes here, like in index.html file also. We adding the script file and just here writing the index.js and just using the console.log. Yes. And we changes here and adding the script and doing the top of the index.js file. Okay. Now recently we used command the git status. Okay. सेम टाइम पे हमने उसने क्या दिया था कि जिस फाइल में हमने चेंजेस किया था index.html में न्यू फाइल ऐड कर दी थी, यहाँ पे सिर्फ index.html ही दिखा दिया था। अब हमने दो फाइल, वन index.js न्यू फाइल क्रिएट की है एंड एग्जिस्टिंग फाइल जो थी index.html उसमें कोड किया, राइट। यहाँ पे अगर जाते हैं git status कमांड रन करते हैं तो modified index.html फाइल एंड न्यू एडेड फाइल index.js फाइल। ओके, एंड यहाँ पे हमें सजेशन भी देता है कि git add git commit करके, राइट। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं, git add git commit added js file। okay? अब git पुश करने से पहले मुझे याद आया कि आई नीड टू सम थिंग्स ऐड इन माय एग्जिस्टिंग फाइल एंड एग्जिस्टिंग फाइल, राइट। तो मुझे यहाँ पे कुछ फाइल में ऐड करना है तो मैं भूल गया था। तो यहाँ पर जाकर अगर मैं यहाँ पे console.log 1+1 कर देता हूँ, ये जो मैं फॉरगेट हो गया था कि ऐड करना मैं भूल गया था। उसके बाद लेट नेम इक्वल टू, ये वाले चेंजेस मैंने इस वाले फाइल में कर दी, ठीक है। अब मैं फिर जाके यहाँ पे चेक करूंगा git status modified index.js फाइल, ये जो चेंजेस है ऐड करने हैं तो सेम प्रोसेस सेम टाइम, मतलब सेम फाइल में जो अभी हम अगर जो ब्रांच की बात करेंगे ओरिजिन की feature.js में ही, इसमें हमने फर्स्ट टाइम क्या किया कि मॉडिफाइड किया index.html में स्क्रिप्ट टैग ऐड कर दिया था, index.js न्यू फाइल ऐड कर दी थी एंड उसको git add git commit कर दिया। बट पुश करने से पहले हमें याद आया कि यार हम और भी चीज़ें हमें फाइल में ऐड करनी है और भी फीचर्स के ऊपर काम करना है, सेम ब्रांच में करना है। सेम ब्रांच में हमने वो काम करके गिट स्टेटस कर दिया, वर्क करने के बाद गिट स्टेटस कर दिया मॉडिफाइड index.js फाइल। यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, गिट ऐड git commit -m for the committing message and adding the some meaningful message, added new function, added new adding add function in js फाइल। ठीक है, दो मैसेज, अगर इन दो मैसेज को अगर देखना है कि हाउ मेनी मैसेज मतलब कितने कमिट्स हमने अभी तक किए हैं, तो उसके लिए गिट लॉग करके कमिट गिट लॉग अगर आप रन करोगे तो आपने अभी तक इस फाइल में जितने कमिट्स किए हैं तो जेएस फाइल यहाँ पे आपको कमिट्स बताएगा, लाइक विद इन द टाइम भी बताएगा। एडेड न्यू फंक्शन इन जेएस फाइल एडेड, ये दो कमेंट्स अभी है और मेन ब्रांच तक अभी तक कितना पुश हुआ है कोड वो यहाँ पे दिखाएगा आपका। एडेड न्यू एचटीएमएल फाइल, नेम ऑफ द इंडेक्स, और ये जो ब्रांच हमारे फीचर्स ब्रांच है सेम मेन ब्रांच में मर्ज भी हो सके थे, मर्ज पुल रिक्वेस्ट h1 from the Sudarshan GitHub name and here the branch name। ओके, अब सेम चीज को पुश करना है तो सेम प्रोसेस है, git push origin branch name है origin name। ओके, तो pushing this code। Here we will get the compare and pull request. We can generating the pull request here। See, here are the two commits, okay, and I'm merging this file my existing। अब देखो, अब मैं एक यहाँ पे एक करता हूँ कि git checkout main, जो मेन ये है उसमें हम अभी चेकआउट कर दिया।
अब यहाँ पे पुल नहीं लिया है, ठीक है, पुल ना लेते हुए यहाँ पे न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं, git checkout F1B। अब यहाँ पे अगर मेन में अगर आप कोड में देखोगे यहाँ पे तो आपका जेएस फाइल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम हमें क्या करते हैं ना, यहाँ पे जेएस फाइल जनरेट करते हैं, git checkout F1B फीचर न्यू जेएस फाइल, पहला जेएस फाइल था, अब न्यू जेएस फाइल करके यहाँ पे बना दिया, राइट। अब इस वाले ब्रांच पे अगर यहाँ पे जाके index.js फाइल जो कि हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी एक फाइल, राइट, यहाँ पे भी न्यू फाइल कंप्लीट ऐड कर दी, उसमें भी console.log हेलो करते हैं, ओके। यहाँ पे सेम प्रोसेस, git status, add a new file, git add, git commit message, and we push origin name like feature new JS file, okay। अब यहाँ आने के बाद ये देखो, इसका भी कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट आई, राइट। अगर हम एग्जिस्टिंग फाइल देखें, index.js फाइल हमारे पास ऑलरेडी जनरेटेड है, बट हमने और एक जेएस फाइल यहाँ पे क्रिएट करके अप कर दी, ओके। तो यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, क्रिएटिंग पुल रिक्वेस्ट, ये देखो यहाँ पे कि दिस ब्रांच हैज द कॉन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी रिजॉल्व, कॉन्फ्लिक्ट फाइल index.js, क्योंकि सेम नाम की दो फाइल हुई है, जहाँ पे हमने यहाँ पे पहले पुल लेने से पहले ही git ब्रांच, अगर हम मास्टर यहाँ पे मेन पे जाएंगे तो पुल लेने से पहले ही यहाँ पे आ गए हैं, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स इस वाले ब्रांच में आ गए। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के लिए, ये थोड़ा सा ना क्रिटिकल पार्ट है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या करने की, जैसे कॉन्फ्लिक्ट आया है हमारे करंट ब्रांच में, हम क्या करेंगे, git checkout मेन, रिसेंटली हमने न्यू जेएस फाइल ब्रांच क्रिएट करने से पहले, सॉरी न्यू जेएस फाइल ब्रांच क्रिएट करने से पहले हमने पुल नहीं लिया था। अब क्या करेंगे, git pull origin main, मेन का पुल ले लेंगे। यहाँ पे मेन का पुल लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास index.html जितना भी कोड जो प्रीवियस ब्रांच का जेएस फाइल वाली जो ब्रांच थी, इसका जितना भी कोड था अब हमारे मेन ब्रांच पे आया, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट किस ब्रांच के साथ आया था, हमारा फीचर न्यू जेएस फाइल के साथ, राइट। तो अब सेम ब्रांच पे यहाँ पे चेकआउट करेंगे, git checkout फीचर। अब देखो ब्रांच एग्जिस्टिंग ब्रांच है इसलिए गिट चेकआउट, और न्यू ब्रांच करने के लिए गिट चेकआउट -b कमांड यूज करते हैं, न्यू जेएस फाइल, ओके। यहाँ पे आगे इस वाले फाइल पे आगे, तो अभी यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाएगा, और जेएस फाइल जो दिखेगी हमारी इंडेक्स console.log हेलो ही दिखेगा। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो प्रीवियस जेएस फाइल थी उसमें हमने दो console log ऐड कर लिए, राइट, console log, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिट रिबेस करके आता है, कि गिट रिबेस मतलब इसका जो बेस है इस वाले फाइल का वो चेंज कर रहे हैं, किसके साथ, मेन के साथ, गिट रिबेस मेन। यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट बताएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कि ऐड ए न्यू जेएस फाइल कॉन्फ्लिक्ट, राइट, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन द index.js फाइल, index.js फाइल में भी आपको बता रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें क्या है कि यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट उसने बताया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सेप्ट द करंट चेंजेस, मतलब जो लास्ट चेंजेस थे हमारे रिबेस के साथ जो चेंजेस आए वो आएंगे, और इनकमिंग चेंजेस अगर एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ हमारा यही आएगा, console.log हेलो, ठीक है। अगर दोनों को भी एक्सेप्ट करना है, मतलब एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम इसे रखते हैं कि कौन सा इसमें से यूज करना है, एक्सेप्ट चेंजेस करना है, इनकमिंग चेंजेस करना है, या वो चेंजेस एक्सेप्ट करने,
तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें दोनों भी कोड चाहिए, मतलब दो डेवलपर्स में अलग अलग ब्रांच में कोड किया था, बट दोनों का ही कोड हमें यहाँ पे चाहिए। तब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना कि एक्सेप्ट वो चेंजेस, ठीक है। तो इससे जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हट गया। कॉन्फ्लिक्ट हटने के बाद यहाँ पे आपको VS कोड में क्लियर हो गया। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, git add git rebase, जो हमने रिबेस किया उसको हाइपन हाइपन कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू हो जाएगा अप्लाइंग ऑन द जेएस फाइल। अब देखो, अब यहाँ पे अगर जाओगे आप पुल रिक्वेस्ट में, जहाँ पे हमारा पुल रिक्वेस्ट जनरेटेड है, यहाँ पे अभी भी कॉन्फ्लिक्ट शो करेगा, राइट। अब क्या करते हैं, गिट रिबेस हाइपन हाइपन कंटिन्यू कर दिया। अब जो हमने रिबेस कोड किया है उसको पुश करना है, गिट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम फीचर। ये कोड पुश नहीं होगा क्योंकि क्या किया ना, हमने रिबेस कर लिया, तो ये कोड दिक्कत देगा। तो हमें इसको ना फोर्सफुली पुश करना पड़ता है। अभी हम रिबेस करेंगे तो उसके बाद हमें कोड को फोर्सफुली रिबेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाइपन एफ, एफ यानी फोर्स, अपना ये कोड पुश हो जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज, यहाँ पे पहले कॉन्फ्लिक्ट था, राइट, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। अब बता रहा है कि दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट विद द बेस ब्रांच। अब यहाँ पे हमें ब्रांच इसको मर्ज कर सकते हैं, कंफर्म मर्ज। और कोड में आप जाओगे, जेएस फाइल में पहले दो ही कंसोल लॉग दिखा रहे थे, अब यहाँ पे तीनों भी कंसोल लॉग दिखाना शो करेगा, कंसोल लॉग हेलो। अगर हम इसे पुल, अब फिर से एक बार मास्टर पे जाते हैं, गिट चेकआउट मेन ब्रांच पे जो हमारा मेन ओरिजिन है, और इसे पुल कर लेते हैं, तो पूरा कोड हमारे पास आ जाएगा। थोड़ा सा समझने में गिट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। यहाँ तक अभी किसी को डाउट? आई थिंक सो डाउट तो होना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना आप लोगों को, क्या कुछ भी समझ थोड़ा में हेवी नहीं है। है? ठीक है, तो एक बार हम फिर से डॉक्यूमेंट के थ्रू चलते हैं ना क्या। तो बेसिकली क्या करना पड़ता है ना कि गिटहब का सेटअप करने के लिए कि आपको SSH की जनरेट करनी पड़ती है। तो जो SSH की हमेशा टर्मिनल पे जनरेट करते हैं, गिट बैश हो तो गिट बैश पे करो, आपके पास टर्मिनल है तो टर्मिनल पे करो। जैसे ही आपका SSH की जनरेट हो जाएगा तो वो एक फोल्डर का पाथ देगा कि कहाँ पे वो हमारा जनरेट हुआ है SSH, ठीक है। उसे उस फोल्डर में जाके RES और पब्लिक नाम का फोल्डर होगा, या डिफरेंट डिफरेंट नाम के फोल्डर्स होते हैं उसमें। अगर यहाँ पे देखूंगा मैं id.ra नाम का एक फोल्डर है, इसमें आपका SSH की होता है, उससे आपको कॉपी करना है। कॉपी करके आपके गिटहब अकाउंट में जब भी आप जाओगे तो सेटिंग में SSH की ऐड कीजिए, पिन पे यहाँ पे आपको आपका SSH की ऐड करना पड़ता है। एक बार आपने SSH की ऐड कर दिया तो उसके बाद आपको सेम टर्मिनल में ही गिट कॉन्फिग हाइपन यूजर नेम, जो भी आपका गिटहब का यूजर नेम होगा वो यूजर नेम यहाँ पे देना है। गिट कॉन्फिग हाइपन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, यहाँ पे आपका जो जिस ईमेल से आपने गिटहब अकाउंट बनाया है वो वो ईमेल आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अगर सिर्फ आपको वो ऐड किया हुआ गिटहब और ईमेल है, वो आपके फोल्डर में है या नहीं है, ऐड हुआ है नहीं हुआ है, चेक करने के लिए जस्ट इतना ही आप रन करवा दो, ही रन करवा दो। गैप नहीं है, कहीं पर है तो वो देख लें। तो यहाँ पे आपको जीमेल बताएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ये जो गैप आ रहा है ना, ये गैप नहीं है, इसको हटा दूंगा मैं बाद में, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपडेट कर दूंगा ये वाला। ये सेटअप होने के बाद आपका गिटहब की भी ऐड हो गया। उसके बाद आपको क्या जाना है, गिटहब पे जाना है। गिटहब पर जाकर कि जहाँ पे प्रोफाइल रहेगी, योर प्रोफाइल में, तो यहाँ पे ओवरव्यू है, रिपोजिटरीज है, प्रोजेक्ट्स है, पैकेजेस है, स्टार्स, जितने
आपको स्टार्स मिलेंगे। तो रिपोजिटरीज में जाओ, रिपोजिटरी में जाकर आप यहाँ से न्यू रिपोजिटरी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन का ये नहीं है तो ओनर खुद को ही ऑटोमेटिकली आपका ओनर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रिपोजिटरी का नेम देना है, पब्लिक रखनी है, पब्लिक यानी सबके लिए विजिबल होगी, वो यहाँ पे देनी है। प्राइवेट है तो प्राइवेट यहाँ पे आपको ऐड करवानी है, प्राइवेट है तो प्राइवेट देनी है। अगर आपको रेडमी फाइल चाहिए तो यहाँ पे रेडमी फाइल आप ऐड कर सकते हो। गिट इग्नोर चाहिए, जैसे कि आप नोड जेस या बाकी चीज़ों में हम जब प्रोजेक्ट बनाते बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो उसके लिए आपको गिट इग्नोर फाइल चाहिए होती है। कुछ कुछ कोड हमें गिटहब पे पुश नहीं करते, उसके लिए गिट इग्नोर फाइल ऐड करते हैं। लाइसेंसेस अगर यूज़ करने हैं तो लाइसेंसेस यूज़ कर सकते हैं। लाइसेंसेस इसके लिए होते हैं कि आपका प्रोजेक्ट को इजीली एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए लाइसेंसेस यूज़ कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी, जैसे रिपोजिटरी क्रिएट हो जाती है, अगर आपकी कस्टम रिपोजिटरी है मतलब सिंगल पर्सन की रिपोजिटरी है तो आपको आपके इसका एसेस आपके फ्रेंड या किसी और के साथ जिसके भी साथ आप प्रोजेक्ट कोलैबोरेट कर रहे हो उनको देने के लिए जिस भी रिपोजिटरी में आप जाओगे उसको रिपोजिटरी में जाना है। लाइक यहाँ पे लर्निंग टू में सेटिंग में जाकर आपको यहाँ पे कोलैबोरेटर्स ऐड करवाना है। यहाँ से तुम ऐड पीपल करवा सकते हो। उनका गिटहब यूजर नेम यहाँ पे ऐड कर दो, सेलेक्ट कर दो, उनको मेल चला जाएगा, रिक्वेस्ट चल जाएगी मेल में, और वो आपका प्रोजेक्ट क्लोन करके यहाँ मतलब उनको जैसे ही मेल चला जाएगा, मेल एक्सेप्ट करने के बाद जब हिट करेंगे यूआरएल को, मेल में जो यूआरएल रहेगा इस रिपोजिटरी का जो पाथ रहेगा उसका, ये वाला डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। ये वाला डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से एसएसएच की अगर आपने ऐड की है तो ये वाला पाथ आपको कॉपी करना है। ये वाला पाथ कॉपी करके नॉर्मली जाके जहाँ भी आपके टर्मिनल में जहाँ भी आपको प्रोजेक्ट्स को रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है या और किसी फोल्डर्स में रखना है, तो वहाँ पे सिर्फ आपको गिट क्लोन नहीं कमांड करना है, गिट क्लोन और जो पाथ आपने कॉपी किया था वो पेस्ट करना है। गिट बैश में कभी कभी आपका पेस्ट नहीं हो रहा है, लिनक्स नहीं हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट वी से वो पेस्ट आप वहाँ पे कर सकते हैं, कंट्रोल वी या कंट्रोल शिफ्ट वी से। जैसे ही आपका यहाँ पे जब भी आप कोड को क्लोन करोगे, क्लोन करने के बाद पूरा रिपोजिटरी आपके पास आ जाएगा। आप वीएस कोड में जब ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको जितना भी कोड दिखेगा और जिस भी फीचर्स का आपको काम करना है उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि पहले ब्रांचेस चेक करनी है और चेकआउट करके न्यू ब्रांच क्रिएट करनी है, गिट चेकआउट -b न्यू ब्रांच, और इसके ऊपर न्यू ब्रांच क्रिएट करके फिर से क्या, अगर आपको लगता है कि यार ब्रांच क्रिएट हुई है, जनरेट हुई नहीं, सिर्फ गिट ब्रांच करके आप कमांड चला सकते हो। यहाँ पे न्यू ब्रांच का आपको कुछ भी कोड ऐड करना हो सिर्फ ये न्यू ब्रांच में जाकर यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे मान के चलो मैंने तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, भी कर दिया। जितने भी आप चेंजेस करोगे आप यहाँ पे आकर सिर्फ गिट स्टेटस चेक करोगे कि कौन से फाइल में आपने चेंजेस किए, index.js फाइल में चेंजेस किए। अब आपको इन चेंजेस को क्या करना है, पुश करना है गिटहब के ऊपर, राइट। तो सिंपल कमांड गिट ऐड, उसके बाद गिट कमिट, कमिट मैसेज, जो भी आपको देना है एक्स वाई जेड, मतलब जो भी उसका मीनिंग निकलेगा, मतलब जिस भी फीचर्स के ऊपर आपको ने काम किया है उसको एक शॉर्ट में आपको बताना है कि यार एग्जैक्टली इसमें वर्क क्या किया है, एंटर करवा दो एंड गिट पुश द ब्रांच नेम या ओरिजिन नेम बोलो इसको, नहीं क्या, ब्रांच। तो जैसे कोड पुश हो जाएगा गिटहब पे, आप उस वाले गिटहब में जब भी जाओगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि कंपेयर पुल रिक्वेस्ट, आप इसको पुल रिक्वेस्ट कंपेयर कर सकते हो यहाँ से। और जिनको आपने दिया है, मतलब आपको लगता है कि यार किसी को एज ए रिव्यूअर ऐड करना है, मतलब जो भी आपके प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे हो, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि वर्क इन स्टिल प्रोग्रेस है या कन्वर्ट टू ड्राफ्ट है, मतलब ड्राफ्ट ब्रांच बनानी है, नहीं का, तो वो, और किसी को रिव्यूअर्स ऐड करना है तो आप यहाँ से रिव्यूअर ऐड करवा सकते हो। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में प्रथम है तो प्रथम को मैं यहाँ पे ये रिव्यूअर ऐड करवा सकता हूँ।
यहाँ पे आ गया प्रथम रिव्यूअर। प्रथम इस ब्रांच का रिव्यू कर सकता है कि जैसे कि अब यहाँ पे रिव्यू जब होगा तो वो आके यहाँ पे चेक करेगा कि कैसा था। यहाँ पे अगर उसे जो लगता है कि रिव्यू में क्या बताना है तो यहाँ पे वो कमेंट मैसेज ऐड कर सकता है। जैसे कि ऐड स्पेस बिटवीन टू लाइन, इस तरीके के कमेंट मैसेज वो ऐड कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से चेंज रिक्वेस्ट के लिए दे सकता है। मैं पर्सनल अभी खुद तो मैं चेंज रिक्वेस्ट भी नहीं दे सकता हूँ, अप्रूव भी नहीं दे सकता हूँ ना, क्या तो सबमिट रिव्यू कर सकते हैं यहाँ से। तो ये अब देखोगे यहाँ पे ये हुआ स्पेस बिटवीन देना टू लाइन्स में। अगर ये मुझे मैसेज मिलता है मुझे चेंजेस करने हैं तो सेम फाइल में जहाँ आया है यहाँ पे मैं जाके गैप दे दूंगा, स्पेस दे दूंगा। ठीक है, हर एक फाइल में सेम git add git commit वही प्रोसेस फॉलो करूंगा। सॉरी, git add git commit equinum commit resolve push patch। अब देखो ये पीआर जनरेट हुई थी, अब यहाँ पे कमिट रिजोल्व आ गया, ये रिजोल्यूशन चला गया यहाँ पे। ठीक है, ये कमिट मैसेज वैसे रहेगा, बट अगर यहाँ पे प्रथम जाके देखेगा तो यहाँ पे गैप्स ऐड हुआ है। ठीक है, अब इसका नो कॉन्फ्लिक्ट्स इस फाइल पे मर्ज रिक्वेस्ट जनरेट कर, मर्ज रिक्वेस्ट हो गया, कंफर्म मर्ज। अगर यहाँ पे आकर देखेंगे ये ब्रांच मर्ज हो गई, जीएस फाइल हमारा चेंज हुआ है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस फॉलो होता है। गिट गिटहब समझने में इनिशियल डेज में थोड़ा सा टफ है, तो शायद होप सो आप लोगों को मतलब 20% 30% एटलीस्ट गिट ऐड गिट कमिट तो समझ में ही आया होगा कि किस लिए यूज होता है, गिट चेकआउट किस लिए किया जाता है, गिट चेकआउट ओपन बी में और गिट चेकआउट में क्या डिफरेंस होता है। अगर एग्जिस्टिंग ब्रांच है तो हम जस्ट गिट चेकआउट करते हैं। अब मेन ब्रांच में जाना है, गिट चेकआउट करके मेन ब्रांच में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका गिट गिटहब हेल्प करता है। मतलब मान के चलो कि आपका कभी लैपटॉप खराब होता है या कुछ होता है तो आपका जो कोड है वो सेफली आपके गिटहब अकाउंट में रहेगा। आप कहीं भी गिटहब वाला अकाउंट लॉगिन करो, आपका कोड आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कुछ डाउट किसी को? नो सर। ठीक है यार, होप्स तो ये डॉक्यूमेंट आपको समझ में आया होगा, इसमें थोड़ा सा मतलब आशा करता हूँ। कभी भी अगर आप लर्निंग स्टार्ट करते हो गिट गिटहब में, कभी भी प्रॉब्लम्स आता है या कुछ होता है तो रीच आउट करना। राउत सर के पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है, एंड कल भी मैंने किसी से तभी कनेक्ट किया था, उनके पास भी मेरा मोबाइल नंबर होगा ही, राइट। तो आप कभी भी कनेक्ट कर लो करियर गाइडेंस के लिए, फ्रंट एंड लाइक डेवलपमेंट के लिए आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। या उदय, स्टेज योर टर्न। ओके सर। ठीक है, यूर सर, इज इट ओके? Hello, am I audible? या मेरे, यस 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 सर। Yes, sir. Yes. The session was excellent. In short, you have explained everything to the students. It requires a lot of practice actually Yes. to learn all this GitHub. It is not that easy for any of the student or any of the developer to learn each and everything in a single go within 1 hour. So Sudarshan has very nicely explained within 1 hour that what is the GitHub and some concepts he has explained in short to all the students. So I thank Sudarshan here for joining online to the
complete institutes of Sinhgad at Lonavala campus. So hope so. Again, we will be seeing you in physical mode at Lonavala campus, because Sudarshan is again alumni of our college only. So he will be visiting. So automatically, and if any of the student wants a mobile number in order to connect with Sudarshan, so you can tell me. I will share the personally number, because I cannot give the number to everyone. Otherwise, everyone will call to, right? So okay, so very nice session. Prathamesh, you can give the vote of Yes, sir. thanks. Okay. So can you share your LinkedIn ID, Darshan sir? LinkedIn ID. Yes. I'm not able to share here message. That's why I'm okay. I'm share with the Mayu sir. I'm sir will Okay. share with you. Uday? Yes, yes, I will share. I will share. You share to me. I will share it on the WhatsApp. Okay, sir. Thank you, everyone. Good evening. I am here proposing the vote of thanks on behalf of Spark Committee. I would like to start by thanking the trainer who has shared their valuable experience, insights, and knowledge with our students. Your support and guidance have been instrumental in helping students grow and develop their skills. I would like to thank each and every one of you for taking your time out of your busy schedule to be a part of this program. I would also like to express my appreciation to all the members of the organization committee who have worked tirelessly and make this program ready. Finally, to our students, I would like to say that you have been the centerpiece of this program and we are proud of your hard work and dedication. Your eagerness to learn and grow have been inspiring, and we are confident that the skills knowledge you have gained with your several in your future careers. So once again, I would like to extend a heartfelt thank you to our guests for their support and for being a part of this placement training program. Thank you. Thank you, Ramesh. Yes, sir. Thank you.